Hello students, in this lecture we are going to discuss about absolute value function, or it is known as modulus function. Everybody know that how do we represent a mod function and what is the physical interpretation of a mod function. Absolutely, it denotes the distance of any point from origin. तो नो मैटर कि चाहे हम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज की मॉड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इट एंड अप गिविंग अस अ पॉजिटिव वैल्यूज ओनली बिकॉज एज फार एज डिस्टेंस इज कंसर्न। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज अपना सिग्निफिकेंस ना छोड़े, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर दिस नंबर टू मेक इट पॉजिटिव। करेक्ट, समझनी है तो एक बार फिर देखें। से इफ आई हैव अ नंबर x एंड आई डोंट रिवील its identity, and if I ask you what will be its absolute value, now it would be cheating अगर मैंने आपको यहाँ पे x के बारे में कुछ हिंट नहीं दिया तो। ना अगर मैं ये कहता हूँ कि वट एवर वैल्यू ऑफ एक्स इज इट इज पॉजिटिव, देन ऑब्वियसली आप कहेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके नंबर इटसेल्फ के इक्वल है। बट द मोमेंट आई रिवील दैट दैट पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इज नेगेटिव, देन हाउ वुड यू राइट डाउन योर मोड इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ एक्स। समझ आया क्यों वी हैव टू, हमने क्यों नेगेटिव साइन पुटअप किया है बिफोर दैट नंबर। So now it's time to define the mode that will help you out a lot. Whenever we have a mod over x, जैसे कि अगर x greater than 0 है, then obviously we'll give a positive response, so that don't need any additional negative sign before this number. 0 पे 0, जबकि lesser than 0 पे will get a value, it is negative x. Correct. Now students, they do have some common misunderstanding that the square root of 9 will have either plus or negative 3 output. No, this is not the case. See, if I ask you what is the meaning of root x square, then you should say it is the distance between these 2 points. It is the distance between 0 0 with point x comma 0, or it can be 0 comma x. But अगर distance है, then it should be positive. That means the square root of x square, it should give you mod x. यहाँ मोड लगाने के पीछे रीजन ये, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट दिस एक्स इज, वेदर दिस एक्स लाइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वेदर इट इज लाइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा है, देन श्योरली इट इज गिवन दैट 9 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देन इट शुड अट्रैक्ट ओनली अ वैल्यू। उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 3 के ऊपर मोड का साइन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली दिस विल बी इक्वल्स टू 3 ओनली। और इस चीज को डिटेल में समझने के लिए लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। से दिस टाइम आई हैव टू इक्वेशन, वन वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड अनदर वन वेयर एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। x square equals to 16 is actually a quadratic equation. So अगर quadratic है, then obviously two different roots or two solution does exist. So solve करने पे will have these two values. Either x will be equals to positive 4 or it can be equals to negative 4. Wherever x is equals to root 16 is a linear equation. Linear है, so how a linear expression or equation can give you two different values. समझने की बात है। So that is the reason we should have only one output. So whenever we have a expression like this, square root of any positive values, square root of any positive number, ensure कि आप उसका आंसर केवल एक पॉजिटिव वैल्यू से ही दे, ना कि प्लस और माइनस दैट पॉजिटिव नंबर, दैट वुड बी wrong. Now, let me go back to some properties, a bunch of properties regarding your modulus function, which will help us out to understand कि क्या properties हम लोग utilize करने वाले हैं। The first one, mod of x is greater than or equals to 0. Absolutely, it does make sense. Distance 0 0 की किसी भी coordinate axis में किसी भी point से हमेशा positive होगी। दो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का मॉड इक्वल होता है इनके मॉड के मल्टीप्लिकेशन के। wherever अगर नंबर डिवीजन में है, देन स्टिल वी कैन सेग्रीगेट मोड सच लाइक दिस। लेकिन जब नंबर्स का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तब कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी हो जाती है इक्वेशन से इन इक्वेशन की ओर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग फॉर मोड ओवर a plus b, then its result will be lesser than or equal. So remember, ऑलवेज इक्वालिटीज होल्ड नहीं होगी। वो इक्वालिटीज होल्ड कब होगी? वो उन इन दो केसेस में होगी स्पेसिफिकली, जब आपके दोनों ही नंबर पॉजिटिव है या आपके दोनों ही नंबर है नेगेटिव। आप कोई भी दो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कंसीडर कर सकते हैं, लेट इट बी 3 5, देन ऑब्वियसली इक्वालिटीज विल होल्ड। वेरेवर अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, देन स्टिल इट विल बी द केस व्हेन योर इक्वालिटी इट डज होल्ड।
वेरेवर अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होता है, इन दैट केस मॉड ओवर ए प्लस मॉड ओवर बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी। बिकॉज ए प्लस बी में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नंबर दूसरा नंबर नेगेटिव के केस में सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज द रीजन इन इक्वेशन विल अकर इफ साइन ऑफ दिस टू नंबर आर ऑपोजिट इन मैनर। तो ध्यान रखें, जब भी नंबर्स का सम है आप उसमें मॉड अप्लाई कर रहे हैं, देन इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा इक्वालिटीज ही होल्ड हो। एंड सिमिलरली वी डू हैव द सेम कंडीशन व्हेन डिफरेंस ऑफ नंबर इज व्हाट वी आर टेकिंग। हमेशा यहाँ पर भी इक्वालिटीज होल्ड नहीं होगी। इक्वालिटीज होल्ड होगी केवल उन केस में जब या तो दोनों ही नंबर आपके पॉजिटिव है और या दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव है। अदरवाइज equation inequalities will remain valid. So that is the case when your equality all that particular point it play a very key role while we'll start solving question from mod inequations only. Anyway, it's a very far away concept right now. So let us complete the modulus equation first of all. Now, modulus equation के केस को हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है. पार्ट वन, जब mod of a function it is equals to a constant value only. There isn't any other term participating there. So what will happen if a is positive? Just have a look on this example. If mod over x is equals to 1, then what will you expect from your x? Absolutely right. We'll have two different opinion. X can be positive or even x can be negative. But what if your a is equals to 0? In that case, we will get a single value only. Now, for a lesser than 0, we will not have any solution. So, no solution in that case. So, unlike your linear equation where we only get a solution only, modulus equation can have a 0, 1 or 2 solution. Correct. So just have a look on this question. We have mod over 1 minus x equals to 5. आप चाहें तो यहाँ ट्रायल एंड एरर अप्लाई कर सकते हैं मेथड टू रेंडमली असाइन वैल्यूज ऑफ x। तो अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं देन ऑब्वियसली वन शुड बी योर x इज इक्वल्स टू 6 एंड अनदर वन विल बी योर x इज इक्वल्स टू -4। अगर आप मेथड से जो तरीका हमने यहाँ पे mod x इक्वल्स टू a को सोल्व करने के लिए किया है वो तरीका अगर आप यूज में लेते हैं देन स्टिल यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x. So in that case you just have to show कि जो भी आपको right hand side में value दी हुई है it is positive and then open up this value with a plus and minus sign. You will have your solution. One will be positive 6 and another one will be -4. Correct. But situation will get tougher. Situation will get tougher when we have equation like this. Just have a look on this question. इस बार हम लोग सीधे ही प्लस और माइनस से ऑपोजिट नंबर को ओपन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तो देखें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मोर देन टू टर्म्स आर पार्टिसिपेटिंग देयर एंड अनदर थिंग इज दैट we are unsure about the sign of this 10 minus x. Now this 10 minus x can be positive if x is lesser than 10. It can be negative if x start taking values which are greater than 10. करेक्ट। और इट मे बी जीरो व्हेन एक्स विल टेक वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। तो अभी आपको करना क्या होगा, इस वाले केस में आपको मोड की दीवारें गिरानी होगी। व्हाट डू आई मीन बाय रिमूविंग दिस मोड साइन? सी if I ask you just give me any particular point where your mode will become a zero, obviously your answer will be 2. now क्या x is equals to 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा? एब्सोल्युटली नॉट, because 2 पे left hand side is getting 0 wherever right hand side we have a finite value equals to it. 2 पे सोल्यूशन नहीं हुआ। बट हुआ क्या है, नंबर लाइन पे ये 2 ड्रॉ करने से हमें एक डायरेक्शन मिल जा रही है कि दो अलग अलग रीजन में विल ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन। रीजन नंबर 1 व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 2। उसे होगा क्या, जब हम इस रीजन में x ग्रेटर देन 2 के लिए सोल्यूशन सर्च कर रहे होंगे तब मॉड के अंदर का जो नंबर है इट रिमेन पॉजिटिव। सो इफ यू आर श्योर इट रिमेन पॉजिटिव देन इट इज advisable to open this mod with a positive sign, because we already know mod x will be equals to x only when x is greater than 0. When you are sure whatever inside this mod is positive, तब आप mod को positive sign से open कर सकते हैं। Correct. So from there only we'll get a value of x. It is 6. It is 6. Now ask yourself, क्या 6x greater than 2 वाले रीजन में लाई करता है? If yes, then we have successfully figured it out one of its solution.
बट नाउ एक रीजन अभी भी अधूरा है, इट इज फॉर x लेसर देन 2। x लेसर देन 2 में इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन, देन करना क्या होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू इस समय नेगेटिव होगी, देन टू मेक इट पॉजिटिव आई हैव टू अप्लाई फर्दर negative sign. But this time what I am getting is something which is not natural. It is, I'm getting 2 is equals to 10, which is not visible, at least not in this universe. X lesser than 2 के लिए if I am getting that unnatural solution, then what should I say? I should say there will not be any solution in that region. So the only solution of this equation is x is equals to 6. So typically this is known as the type 2 method, where you have to define your mode sign there. So now let me have the last one there. We have more than one term. एक से ज़्यादा term है, then what do we need to do? We just need to find that point जिन पे ये mod 0 हो जाएगा. First mod will take a value 0 at x is equals to 3. Wherever at x is equals to -1, second mod will get 0. Ask yourself whether 3 or -1 is the solution of this inequation or not. 3 रखने पे obviously will get a 4 from second term. Wherever -1 रखने से will still get a 1 from first mod expression. Again, this time this number line is divided in three regions. There's a number one which is greater than 2, region 2 which is between -1 to 3, and region 3 which is lesser than -1. बारी बारी से हमें क्या करना है, हमें तीनों ही रीजन में सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो चलिए करते हैं मूव पहले रीजन में जहां x ग्रेटर देन 3 है. x ग्रेटर देन 3 होने के लिए if you are sure first mod will always be positive, second values inside this mod will always be positive, then you are free to open up this sign of mod with a positive sign. Do find out the solution if you can, and do let me know what values of x is. X is equals to 3 is what I am getting. I already included x is equals to 3 as a solution, but ये case 2 का part नहीं होगा because we have assigned x should be greater than 3. Similarly, if I try to find out if there is any solution in case number 2 which is from -1 to 3, इसके लिए जब x greater than -1 है तो सेकेंड वाला मोड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली x is lesser than 3 in that region, so your first mode will open with a negative sign there. And if this is equals to 4, this time I'm getting something which is universally true. 4 is equals to 4. What does it meaning? And how will I get the solution in case number 2 then? See, 4 is equals to 4. It is true in that region. It convey this message that every values of x which lying in that region will be our solution. So by default, every values from -1 to 3, every real value will be your solution. Wherever, if you try to find out if there is any solution in region number 3, which is for x lesser than -1, in that case, both mod will open with a negative sign, and this time what will happen? This time we will get a value of x, and this time it is equals to -1. Unfortunately, we already counted x is equals to 1 as a solution. Now, when you start writing it, your final solution consists of solution from case number 1 plus solution from case number 2 plus solution from case number 3. And do not forget to count if your critical points or point where your mod will change definition are the solution or not. So their union will give you a final answer, and it is including 1 2 including 3. So this is about the mode. In the next lecture we'll be discussing some more challenging question on mode. So thank you very much.